हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी सिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरी रैंक 34,000 थी जेई में, मेंस में। और मैं गया सिटी में रहता हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 है एनसीईआरटी बुक 2 का। और इस चैप्टर में हमें आज बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कवर करनी है, जो कि एक बहुत आसान टॉपिक है और सिंपल सी बात है। जैसे बेसिकली आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ थिंग्स टू हैपन। मतलब अगर आपका कॉइन है, एक कॉइन है, जैसे ये कॉइन में एक टेल्स होता है और ये इसमें हेड्स होता है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। मीन्स अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो चांसेस है कि टेल्स आए, तो हाफ चांसेस होती है उसकी। और चांसेस हो हेड्स आए तो उसकी हाफ होती है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ चांसेस। तो अब हम अपने टॉपिक में इसमें आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो जैसा कि नाम से आप जान रहे हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स कोई कंडीशन फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपना यहाँ पे पहला एक्सरसाइज एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें 3 पेयर कॉइन्स दिए हुए हैं और उसका सैंपल स्पेस हमें यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ये ऐसे है। और हमें मतलब जितनी भी अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी 10th में पढ़ी होगी, उससे हमें बेसिक नॉलेज इतना होगा ही कि एवरी इवेंट इन दिस सैंपल स्पेस इज हैविंग 1/8 प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें पूछा क्या जा रहा है इसमें कि ई बी एन इवेंट वेयर एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर और एफ बी एन इवेंट वेयर फर्स्ट कॉइन शो टेल। तो हमें दो कंडीशन दी गई है और हमें सिंपली इसमें बताना है कि ये दो कंडीशन जब कॉन्साइड करेंगी तो हमारी होने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है। उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इस चीज को आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। तो हमें इससे पहले क्या करना है, हमें पहले एक इधर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये करनी है कि हमें ई की सैंपल स्पेस लिखनी है कि ई में क्या क्या हो रहा है। और फिर हमें एफ की सैंपल स्पेस लिखनी है कि फर्स्ट कॉइन शो टेल। तो हमने लिख दी। और फिर हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन आप देख सकते हैं बस एक ही टर्म होगा, टी एच एच। तो हमें पी और पी ई इंटरसेक्शन एफ में हमें एक ही मिली है, तो हम हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। ठीक है। अब अब हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि ई ई इंटरसेक्शन एफ विद कंसिडरिंग एफ एज अ सैंपल स्पेस। तो वो हमारी यहाँ पे हमारी एफ की सैंपल स्पेस 1/2 है। तो अब हम जब उसको कंसिडर करके ये करते हैं तो हमारी जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकलती है पी, इस फॉर्मेट में लिखते हैं ई डिवाइडेड बाई एफ इक्वल्स टू 1/4। तो हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें जो होता है कि हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो अब हम बेसिकली ये जान गए कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब हम इसमें इसका जो डेफिनेशन आप एक बार अच्छे से देख लें, और इनमें ये 3 प्रॉपर्टी होती है, जो कि मैं एक बार सरल भाषा में वो समझा देता हूँ। इसमें ये लिखा है कि ई एंड एफ बी एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मी। और देन वी हैव प्रॉपर्टी 1, probability of S with condition F equal to probability of F with condition F equal to 1। मतलब probability S कंडीशन F, S सैंपल स्पेस और उसके इंटरसेक्शन F है।
तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या होगा, अगर आपका ये ऐसा मान लीजिए कि ये सैंपल स्पेस है और इसमें आपको हम ये आपका सैंपल स्पेस हुआ और इसमें कोई एफ है, ये एफ हो रहा है और ये सैंपल स्पेस है आपका, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये आपका एफ पार्ट ही कॉमन होगा। तो यही बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ इक्वल टू पी ऑफ एफ बाई पी एफ इक्वल टू 1। और पी और पी एफ कंडीशन एफ में भी आप वही चीज देख सकते कि अगर आपका वही सैंपल स्पेस ऐसे डिफाइंड है और आपका एफ में एफ ही कॉमन होगा, तो आपका वो पी एफ बाई एफ वापस 1 ही आएगा। सिमिलरली प्रॉपर्टी 2 भी आप देख सकते हैं, वैसे ही दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट, द सैंपल स्पेस एस एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ सच दैट पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, देन पी ए इंटर ए यूनियन बी कंडीशन एफ इक्वल टू पी ए कंडीशन है प्लस पी बी कंडीशन है माइनस पी ए कंडीशन बी कंडीशन है। ये शायद आप वो उस फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं जो हमें जब हम ये करते हैं, ये वाली क्वेश्चंस आपको याद होंगे जिसमें ए बी और ए इंटरसेक्शन बी और हमें एन ऑफ ए एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया रहता था और हमें एन ए यूनियन बी निकालना रहता था। सिंपली उस फॉर्मूले में हमने उस इसको एन ऑफ एस से डिवाइड किया, पूरे सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, जो कि इसको एक प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, जो तो आप इधर से समझ सकते हैं। अब प्रॉपर्टी 3 जानी है, पी इन ई ई डैश एफ माइनस 1 माइनस पी इन कंडीशन है। तो ये सिंपली वही है कि आपका जो मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज को वैसे कि अगर आपका पी ऑफ एस का प्रोबेबिलिटी है तो उसका वो लाइक दिस, अगर आपका ये है प्रोबेबिलिटी एस का तो ये पी डैश एस होगा, जो कि आप मतलब यही समझिए कि ये यूनियन से माइनस हो रहा है। सिंपली वही चीज हो रही है, बस यहाँ पे हमें वापस आ, उस फॉर्मेट में लिखा है जैसे लास्ट टाइम लिखा था प्रॉपर्टी 2 को। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जाते हैं एग्जाम्पल्स सॉल्व करना एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है। सारे एग्जाम्पल्स में हम एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें ये है कि a dice is thrown twice and sum of the number appearing is observed to be 6. What is the condition probability that the number 4 has appeared at least once? मतलब हमें ये बोला जा रहा है कि एक डाइस है, उसको हमने दो बार फेंका है और दोनों बार हमने उसके टॉप में जो नंबर्स आए हैं उसका सम ऑब्जर्व किया है। तो क्या बोलता है कि उसका नंबर 6 आए, जैसे हम कर सकते हैं 1+5, 2+4, 3+3, यही 3 बन सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता। तो बस इन्हीं ये 3 में देखना है और इसमें भी देखना है कि एटलीस्ट द नंबर 4 एज अपीयर्ड वंस, मतलब एक बार 4 अपीयर्ड हो, तो वो तो बस एक ही केस में हो रहा है, मीन्स 2 केस में होंगे वो, तो हमें वो देखना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 2 केस में हो रहा है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली टोटल सैंपल स्पेस के ऊपर 2/36। तो अब हम फिर उसके बाद हमें कंडीशन हमारा एफ का था, तो हमारा एटलीस्ट 4 शुड बी एटलीस्ट एफ की प्रोबेबिलिटी ये थी कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप आर कमिंग टू बी 6, तो हमने वो सारी कंडीशंस लिखी, तो वो 5 थे, तो 5/36। तो प्रोबेबिलिटी ई कंडीशन है 2/36/5/36, 2/5 आ रही है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइजेस 30.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, given that E and F are events such that P of E equal to 0.6 and P of F equal to 0.3 and P intersection F equal to 0.2,
you have to find out PE intersection PE condition है and PF condition E. तो हमारे पास जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. E equal to 0.6, P of F equal to 0.3, P intersection equal to 0.3. पहला चीज हमें जो पूछा जा रहा है वो है P कंडीशन है. तो हमें इसका फॉर्मूला मालूम ही, P इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ F. इसकी वैल्यू आएगी जो वो आएगी 0.2 बाई 0.3, दैट इज 2/3. सिमिलरली हमारे पास अब हमें निकालना पी एफ ऑफ ई. तो पी एफ कंडीशन इक्वल टू पी एफ ऑफ ई. ओके, पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ ई. तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 बाई 0.6, दैट इज 1/3. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हमें बस सिंपली जो फॉर्मूलाज गिवन उनको यूज करके हमने आंसर निकाला है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. तो हमें बोला गया है कंप्यूट पी ए कंडीशन बी इफ पी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 एंड पी ए कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32. तो हमें ए ऑफ बी बोला है, निकालने पी ए कंडीशन बी. हमारे पास पी तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी. एंड we have given values 0.3.2 and 0.5, that is 32/15, which is equal to 0.6. तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही सेम था. हमें बस इसमें आंसर निकालना था, फॉर्मूलाज गिवन थे. तो अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन, तो पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5, पी बी कंडीशन ए इक्वल टू 0.4. देन फर्स्ट पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सेकंड पी ए कंडीशन बी निकालना है, थर्ड पी ए यूनियन बी निकालना है. तो हमें इस क्वेश्चन में दिया ये हुआ है कि हमारे पास जो पी ऑफ ए है उसकी वैल्यू 0.8 है, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.5 है, पी बी कंडीशन ए की वैल्यू 0.4 है. तो फर्स्टली हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारा जो पी बी इंटरसेक्शन ए बी कंडीशन ए है वो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए है. तो इधर से हमने इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं. तो हम बस वैल्यू स्कोर करेंगे 0.4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी
and P of A is 0.8. So basically it is equal to P A intersection V will be 0.3. Now we have to calculate P A condition, which is P A intersection of B by P B, which is 0.33 by 0.5, which is again 0.64. Now we have to calculate third part, that is P A union B. So we will use the old formula we know. P A union B equal to P A plus P B minus probability of N intersection. So we know the value here, 0.8 to 0.5 minus 0.32. 0.8 to 0.5 minus 0.32. So it will be 1.3 minus 0.32. It will be 0.0. Okay. So our third question is solved right now. We will straight go to now question number 4. These questions are very simple because they are directly formula based. Now, just some questions are bit means tricky. Like for here it is given 2 P of A equal to P of B equal to 5 by 30. So first we will take out P's value. So P of A, probability of A equal to 5 by 26 and probability of B equal to 5 by 13. So now we have to we have to take out the value of P A union B. So first we will get out the value of P A intersection B. We will get it straight from this formula. की वैल्यू हमारे पास 2/5 है इक्वल टू हमारी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालनी है और पी ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास 5/13, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी की 2/13 एंड हमें निकालनी थी पी ए यूनियन बी की वैल्यू, पी ए यूनियन बी की वैल्यू, जो कि वापस वही फॉर्मूला यूज करेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी, विच इज हमारी पी ए की वैल्यू आई थी 5/26 प्लस पी बी की वैल्यू थी 5/13 माइनस और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 2/13, जो कि हम सॉल्व करके डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/26 प्लस 3/13 which is equal to
11/26। तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी अपना यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ये पहली एक्सरसाइज उससे थोड़ी सी आसान लग रही होगी आप लोग को, बट ज्यादातर ऐसा होता है कि पहली छोटी छोटी चीजें सीखने में आसान लगती है, बाद में चीजें हार्ड हो जाती हैं। तो इन्हें इन्हें बस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस करना होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती है वो चीज। बस तो आप फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पी ऑफ ए हमें दिया हुआ है 6/11। पी ऑफ बी दिया हुआ है हमें 5/11 एंड पी ए यूनियन बी इक्वल टू 7/12। तो हमें ये तीन चीजें दी गई हैं, हमें वापस वही चीजें पूछी जा रही है। फर्स्ट पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें वो सब निकालने के लिए, हमें इसको निकालने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला थी ना, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर भेज दे और पी ए यूनियन बी को उधर भेज दे। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी। तो सारी वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, हमें बस पुट करनी है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पी ए की वैल्यू है 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। तो इसकी वैल्यू आएगी 4/11 में। और सेकेंडली हमें वापस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है, पी ए कंडीशन भी, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, which is 4/11 by condition of D 5/11, which is 4/5. And the third part is P B condition A, which is again saying P A intersection B by P of A. So this value will come out to 4/11 divided by probability of 6/11, which is equal to 2/3. So here we complete question number 5, and then we will go to question number 6. So in question number 6, we have been given that a coin is tossed 3 times. First condition is given E head on third toss, F head on first 2 tosses. So पहले तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉइन टॉस हो रही है, तो तीनों की हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। हमारी सैंपल स्पेस क्या होगी? हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड फिर हेड, ये सब हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड और टेल हेड टेल और हेड टेल टेल
और टेल टेल टेल। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंडीशंस बनी इस केस में। तो अब हम इस केस को आगे प्रोसीड करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि हेड ऑन थर्ड टॉस। तो ई की हम सैंपल से बनाते हैं हेड ऑन थर्ड टॉस। हम यहाँ पे देखते हैं हेड थर्ड टॉस से कब कब आ रहा है। एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो हेड ऑन थर्ड टॉस में हम बना सकते हैं हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड और टेल टेल हेड। ये 4 कंडीशन में हेड ऑन थर्ड टॉस आ रही है। और हेड और एफ की कंडीशन है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ की कंडीशन है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है और कहीं नहीं आ रही, और कहीं नहीं आ रही। 2 ही कंडीशन है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड 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 और हेड हेड टेल। तो अब हमें निकालना है इसमें पी ई कंडीशन है। तो पी ई कंडीशन एफ के लिए पहले हमें देखना होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ कब हो रहा है। तो बस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही केस में हो रहा है हेड 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 वाले में। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8 हो जाएगी। पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। और पी ऑफ एफ की पी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/4। तो हमें यहाँ पे निकालना था कि ये कंडीशन एफ विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ विच इज 1/8 बाई 1/4। सेकंड 1/4 विच इज 1/3। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी आंसर से इतनी में जो सेक्शन है करेक्ट। we'll go on the second part of this question. E, at least 2 heads. So this फिर वापस हम देखते हैं at least 2 heads. At least 2 heads का मतलब क्या हो गया। At least 2 heads का मैं काम करता हूँ, मैं इधर सैंपल स्किल्स बना देता हूँ बार बार मेरे को ऊपर ना जाना पड़े। हेड टेल 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 टेल। तो हम देख सकते हैं कि हमारे कंडीशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। एटलीस्ट 2 हेड्स वापस देखते हैं एटलीस्ट 2 हेड्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं। कम से कम 2 हेड, एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है। कम से कम 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होगा कम से कम 2 हेड। कम से कम 2 हेड मतलब 2 हेड, कम से कम 2 हेड मतलब 2 हेड होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो चलेगा। तो हम इसकी सैंपल स्पेस लिख लेते हैं हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो ये इसकी 4 कंडीशंस होगी इसमें। और एफ में होगी एटमोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। उससे ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा, उससे कम हो तो चलेगा। उसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी, उसकी उसके में आ जाएगी हमारी हेड हेड टेल। ऐसा मान लो तुम बोलो कि जो अपना सैंपल स्पेस है माइनस हेड हेड। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ जाओ कि एटमॉस्ट 2 हेड्स मतलब
ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही कंडीशन है जिसमें 2 हेड से ज्यादा हो रहा, जो कि है हेड हेड हेड। तो अब हम अगर इसमें देखें तो हमारी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की हमारी इसमें आ रही है क्या, ये चारों आ जाएगी, ये 3 आएगी इसमें से, ये हेड हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो हमारी ये आ जाएगी हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। और हमारे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, ई कंडीशन एफ, which is probability E intersection F by P of F। तो हमारी P of F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें एक ही केस माइनस का तो 7/8 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू 7/8। तो अब हम इसको निकालते हैं, 3/8/7/8 इक्वल टू 3/7। कुछ सही है, ठीक। नाउ when you go to the next question, इसमें बोल रहे हैं एटमोस्ट 2 टेल्स और एटलीस्ट 1 टेल। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है एटलीस्ट एटमोस्ट 2 टेल्स, ई में एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं है। तो वही हम माइनस टी 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 वाला केस माइनस कर देंगे इसमें, सैंपल स्पेस माइनस टी टी टी, और एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए, कम से कम एक टेल, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो एफ की केस में हमें बनेगी एट कम से कम एक टेल, उससे कम नहीं। तो हमारी हेड हेड वाली माइनस हो जाएगी, हेड हेड हेड। सारी चीजें हमें सैंपल स्पेस से ही देख के बनानी है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं करनी है। तो हमारे में जब हम इसकी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो हमारे में, हमारे इधर कॉमन में ये आएगा, इन दोनों को छोड़ के सारी चीजें कॉमन में आ जाएगी, मतलब ठीक है। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखें ई इंटरसेक्शन एफ की, विच विल बी इक्वल टू 6/8, विच इज इक्वल टू 3/4। और प्रोबेबिलिटी एफ की हमारी है इधर 7/8। सो यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्ट, ई कंडीशन एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ बाई ई ऑफ एफ, which is equal to 3/4/7/8। तो हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 6/7। ओके, करेक्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हो कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। फर्स्ट, दो कॉइन हमें हम टॉस टॉस कर रहे हैं, और हमें इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ई ऑफ एफ, जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में। हमें सब में वही करना है, पी ई ऑफ एफ निकालनी है हर कंडीशन में। तो ये हम करते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस वेयर फर्स्ट ई इक्वल टू टेल्स ऑफ ई। फर्स्ट कंडीशन में हमारे फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है ई टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एफ 1 कॉइन शोज हेड। तो हम यहाँ पे वापस सैंपल से सीधे ही बना लेते हैं। तो ये हमारी सैंपल स्पेस है। फर्स्ट केस में हमें देखना है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन शोज हेड। तो ई की हम देखते हैं कंडीशन क्या बन रही है कि
टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल 3 बार अपीयर हो रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी H2 NH और टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, देन टेल अपीयर्स, अच्छा हाँ ये वाली केस नहीं आएगी टीटी वाली। और एफ में हम देखेंगे वन कॉइन शो जेड, तो अगर वन कॉइन शो जेड में आ जाएगा टेल हेड हेड टेल, दोनों में दोनों में दो ही वही सेम केसेस आ रही हैं, तो हमारे ई इंटरसेक्शन एफ में भी दोनों सेम ही आएंगे, हेड टू टेल हेड। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारी आ जाएगी हाफ, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ which is equal to 1 by 2 by 1 by 2 which is 1। तो ये एक आइडियल प्रोबेबिलिटी केस हो गया जहाँ पे मतलब कंडीशंस जो हमने वो पढ़ी थी, कंडीशन पढ़ी थी हम, आप जैसे याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बाय एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ, तो सेम चीज यहाँ पे वही चीज है। तो हम ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम सिंपली वेरीफाई करना चाहते हैं अपने सॉल्यूशंस को, तो बनाना पड़ता है। सो थर्ड में है, सेकंड में है 70 नो टेल अपीयर्स, तो नो टेल कहाँ अपीयर्स हो रहा है, एक ही बार अपीयर हो रहा है कि जहाँ नो टेल अपीयर हुआ, तो हमारी कंडीशन होगी हेड हेड। और एफ में है नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स वो भी एक ही बार हो रहा है टेल टेल में, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी में बस सिंपली ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5, कोई एलिमेंट कॉमन में नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 आएगा हमारा। और इस चीज को ध्यान देख के अगर हम प्रोबेबिलिटी ई कंडीशन एफ निकालें, प्रोबेबिलिटी ई कंडीशन एफ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज अपना न्यूमरेटर 0 है, तो पूरी पी ऑफ एफ कुछ भी हो वो 0 ही होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर दिए। ये हमारा मतलब ऐसा होगा कि आइडियल प्रोबेबिलिटी केस जैसा हो गया, जहां हमारा एक जगह आपको 1 आ रहा है और एक जगह आपको कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो वो आपको 0 आ रहा है। तो हम ये सब क्वेश्चन ऊपर से देख के भी समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी डीप नॉलेज रखते हो प्रोबेबिलिटी में, तो ये सब क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम से आप ऊपर देख के कर सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इधर भी हमने प्रोबेबिलिटी ई कंडीशन निकालनी है, तो हमें दिया हुआ है कि अ डाइस थ्रोन डाउन 3 टाइम्स, तो उसमें हमें कंडीशन दिए 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो हमें हम पहले ई के केस का आउटकम लेते हैं, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, so irrespective of some everything, we will write the 4 6 times. So and we will have 236 or 4 is appear on the third cross. So we will have only 2 cases about like 4 36 36. We will have 36 cases. Now for it is 1 comma 6 comma 4 1 k 2 comma 6 comma 3. Second, it will go to 6 commas. Now it is
1, 5, 4. It will go to 6, 5, 3. Similarly, with it will again move with this in 1, 1, 1, 4, which is here we have total of 36 samples and 4 into the checkups. And for that, we have 6 and 5 appears on the first two boxes. So irrespective of everything, we will write this 6, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 6, 5, 1. So here we will have E intersection net. When we do E intersection net, here only one case will come out to be common, which is 6, 5, 4. Because 4 is coming on the third toss and 6 and 5 are respectively here. So probability of E intersection F would be 1 by 216 and probability of 216 is the sample size of the data given here. And probability of F would be, we have this condition 1 by 6, 216. So probability of E condition F would be probability of E intersection F by probability of F, which is 1 by 216 by 6 by 216, which is 1 by 6. So this question also, question number 8 is also solved there. We'll go to question number 9. You can see the complexity of the questions are increasing as per order. We are now in question number 9. We have 8 more questions now, and we will solve it. 9th question. Mother, father, and son line up at a random for a family picture. Mother, father, and son. M for mother, father, and son. We can, if you have students have permutation combination knowledge, they can easily know that there are 8 orders in which we can arrange this mother, father, and son. We will arrange like mother, father, son. We are creating sample spaces. And again, father, mother, son. We have mother, father, son, father, mother, son. And now we will move son forward. Son, mother, father, son, father, mother, father, son, mother, mother, son, father. So here I think every case is one. Yeah. So actually that sorry 8 not 6 cases. So it's actually 3 factorial, which is equal to 6. So we have to just take out the condition, which is sun on one end. Sun is here on one end, sun is there on one end, sun is there on one end, sun is there on one end. All other ends, he is in between, which
sun is on one end, which is okay, and now we have to take out the condition of F, which is father in middle. Father in middle is of only two cases. Yeah, M, F, S, and S, F. In this two cases, the father is in middle. And now we have to see the intersection of E intersection F, which is equal to now we will do E intersection F, which is M common MFS and SF. We have to see if they are in common, they are not common. So only one case is common here, MFS. So probability of E intersection F will be 1 by 6, and probability of F is 2 by 6. So probability of E condition F will be in intersection F by probability of F, which is um, 1 by 6 by 2 by 6. That is 1 by 6 by 2 by 6. It is 1 by 2. Okay. Now we are in the question number 10. Let me see the section of it. And my person S F okay, so two here are common. Sorry, I did a mistake. S F M. So here also the probability will come out to be 2. So 2 by 6 by 2 by 6 equal to 1. Where the probability will be 1. And now we will go into question number 10. Okay. A black and red dice are rolled. Find the condition probability of obtaining a sum greater than 10 given that the black die resulted in a 5 kick. 10A. We have a red die and a black die. And the first condition is given without the condition of red or black is that the sum is greater than 9. So first we will take out the condition in which the sum obtained sum is greater than 9. So let's assume that first assume the cases in which the sum is greater than 9. So it is, for example, 4, 6, 5, 6, 6, 6. Then these are the three conditions where the sum would be greater than 9. Other than this condition, all the sums are smaller than 9 or equal to 9. For example, 3, 6 is equal to 9. In these conditions only, the sum will be greater than 9. So arranging this condition as per the sample space is there. 4 red, 6 black, 4 and black, 6 on red. Those are conditions. And
5 on black, 6 on red, 6 on black, 5 on red, and 6 on red and 6 on black. 6 on black and 6 on red. The both conditions are same as. So now we will solve question number 10. We are solving. So black die resulted in, so black die resulted in a 5. So black die resulted in a 5. It would be this, the whole row of 5 in the black side. It's 1 red, 1, 2 red, 3 red. That is 1 red, 1 red, 5 black. 5 black. This will continue to 6 red, 5 black. So now E intersection F, E intersection F would be the here 4 red 6. No, here it will be 5 on black, 5 on black, because 6 red and 5 on black. 4 red, no, that we leave from 6 red and 5 on black. 5 red and 5 on black should also be here. Okay, I missed it. 5 red and 5 in black. 5 red and 5 on black. So all conditions are here covered. No, I left one condition there. So here only 2 conditions will be common, that is 5 red and 5 on black. 6 red and 6 on black. 5 on black, sorry. So here probability of 2 intersection F would be 2 out of 36. And probability of F is 1 by 36. Sorry, so 6 by 36. So probability of E condition F could be probability of E intersection F by probability of F, that is 2 by 36 by 6 by 36, which is equal to 1 by 3. Now in the second condition, we are also given, find the condition probability of obtaining sum 8, given that the red die resulted in a number less than 2, 4. So now the conditions are given for sum to be 8. So conditions here would be 2 plus 6, 3 plus 5, 4 plus 4. These are the 3 conditions. So these would be 2 red, 6 black, 6 red, 3 blue, 3 red, 5 black, 5 red, 3 black, 4 red, 4 black. And F is the condition here
the resultant number is in the red die is less than 4. Right? So all numbers not red die, the number should be less than 4. That is one red, one black, one red, 6, 2 red, and 3 red. Similarly, like this. That is the 18 conditions are there. Now, the common one would be Gaussian progression. So, common in the 3 red, 2 red, and 2 condition following here. So, E intersection that we have 2 only, 2 red and 6 black, and 3 red and 5 black. Okay. So probability of E intersection F would be 2 by 36. And probability of F is 18 by 36. So probability E condition F would be probability of E intersection F by probability of F, that is 2 by 30 by 18 by 36, which is 1 by 9. Let me check. Okay, correct answer. Now going to the next question, number 11. So question number 11. Now question number 11, a pair die is rolled. Consider events E equal to 1, 3, 5, F equal to 2, 3, G equal to 2, 3, 4, 5. Find first probability of E, F, and PFG. Consider for P question 1, 3, 5, F is G. So P, we have events 1, 2, 3. F, we have events 2, 3. E intersection F, it is 2, 3. And we can G also 3, 3, 4, 5. E intersection F, E intersection F intersection G. It is 2, 3, 3, and 2, 5. So, and also E intersection G. That is intersection G. 1, 2, 3, and 2, 3 goes out. So, also 2, 3 only here. And yes, it's 1, 3, 5. So E intersection F has common only 3, and E intersection F, 5, G, E intersection F intersection G also has common in common 3 only, and E intersection G has common in 3, 5. So now we proceed over our questions. That is first, probability of E intersection in condition F equal to, which is equal to probability of E intersection F by probability of F, which is from here we have calculated it's 3,
So means only one. And probability of F, we have how many conditions? Two conditions. So 2 by 6, it's half. So first, the probability E comma F is half. And now we will go for the F comma E. Probability F condition E, which is again probability F intersection E by probability of E. So again, we get here 1 by 6 and probability of E. We have three conditions here. Then it is 1 by 3. Now the first part of this question is over. Now we will go to the second part. Second part, it is probability of E condition G, which is probability E intersection G by probability of G, which is E intersection G. Our common things were 2 only. So it will be 2 comma 6 by, in G we have 4 objects, so it's 4. It's and now we have to calculate probability of G condition, which is G intersection E by probability of E, which is 2 by 6 by 3 by 6. So it's 2 by 3. Yes, we have got the answer right. Now we will go to the third part of this question. Third part, it is probability of E union F. E union F condition G. So E union F, we will write it. E union F, it is 1, 2, 3, and 5. And G is here, it is 2, 3, 4, 5. Okay. And E intersection F, we have already written outside. It is only 3. So first we will write here E union F intersection G would be, we have got in common 2, 3, and 5. So it's 2, 3, and 5. And intersection F intersection G, there it is, also the same 3. So now we will proceed to our question. Probability E union F condition G, it is probability of E union F intersection with G by probability of G, which is, we got it common here, 3 by 6, and probability of G is 3 by 6, and probability of G is 4 by 6. It is 3 by 4. And in the next part, it is the probability is of E intersection F condition G, which is equal to probability of E intersection F intersection G by probability of G, which is only one thing in common, 1 by 6 by, where 4 things in common. So it is 4 by 6, which is equal to 1 by 4. So here also the answer comes. So we are now completed question number 11. Now subjective type question number from 12, and we have 2 objective questions here. So we will do it right now. Question number 12.
an instruction in the question bank. Sorry, assume that each born child is equally likely to be born a boy or a girl. The family has two children. What is the condition probability that both are girls? And given that the first youngest is a girl and second at least one is a girl. So in this question, it is being asked that there is a family here where two boys are born and one girl is born. So sample space is girl, 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 boy, boy, girl, boy, boy. So the sample space here is created. Now it is being asked that if what is the condition provided that both are girls? One, the youngest is a girl. Second, at least one is a girl. So it is that the conditional probability with first youngest is a girl, and with F condition we have been given earlier only that both to be a girls. GG. So there's a network issue I came back. Yeah. So there are two conditions here also GG and BG. The younger girls is the here left right side. Now we have to make a conditional probability. So A intersection F, we have only one case in common, that is GG. So probability of E intersection F is 1 by 4. And of firstly, we have taken out the condition E comma F, which is also came out to be 1 comma 4. 4 is also checking if it has that one. And infinity is 2. So, yeah, we will let solve this question later onwards at last. We will go for question number 13. So we have no conclusion now. And go for question number 13. Instruction is instructor have a question back with 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 300 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 500 easy MCQ question, 400 difficult MCQ question. If a question is selected random from the question, what is the probability that it will be going to be an easy question given that it is from multiple choice question? So here it is going to ask that first that E equal to easy question and F is a multiple choice question. So E is that it's an easy question. So we have 300 questions in which it is easy and 500 easy MCQ. So we have total 800 questions there, which is easy and MCQ. Easy 2% MCQ. So it's an easy question. 800 easy questions out of that. And F is that it will be a multiple choice. So we have 900 multiple choice questions. So total we have
1400. It's our total number of questions will be 1400. So uh, our our we have to calculate the value of E intersection F. So our E intersection F would be the only MCQ part, it is which is 500 MCQ question, which is easy. Now we have to calculate probability of E intersection F. So the probability of E condition F would be total number of questions we have. Total number of questions we have 1400 questions, which is let me 500, 4 and 5. Okay, 1400. So probability would be 500 by 1400 by probability of F 900 by 1400, and the answer came to be 5 by 9. Okay, so this question is also solved. Now we will go to 14th question. Given that two numbers appearing on the throwing dart side are different, find the probability that sum of number of dice is 4, sum of the number on the dice is 4, and two numbers appearing on throwing two dice are different. Find out the probability of event. Find out the event that sum of the number of. So here it is given that our sample space should be like that. It's 1, 1 to 6, 6 means 36. Okay. Now our first is that given we have been given that condition that this 1, 1, 2, 2 should not appear like that. Numbers should be different, and also that the sum of the numbers should be 4. So in that condition, the number would be 1, 3, 1, 3, and 2, 3. Sorry. 1, 1, 3 and 3, 1. Only two condition will come here. So when we do, we have whole F is like sample space minus 1, 1, 2, 2. All this 6, 6. All this condition minus the sample space is the F part. So E intersection F would be 1, 3 and 3, 1. We have two conditions here. So probability of E condition F would be probability of E intersection F by probability of F. That is, we have two condition of PERT, 2 by 36, and probability of F is 30 by 36. So we cut it here, and it's 1 by 15. So we solve question number 14 also. Now we'll go to the question number 15. Consider an experiment of throwing dice. If a multiple of 3 comes up, throw the die again. And if another number comes up, toss a coin. So in a die, the multiple of 3 are 3 and 6. So when we throw a dice, now we are throwing a dice. If 3 or 6 comes, then we have to toss a coin. Okay, or toss a coin. Here also toss a coin. So either here head will come or tail will come. Here also tail will come or head will come. Sorry. It's actually different. If 1, 2,
3, 4, 5, 6. When we throw dice, if this number came, we will toss a coin, tail or head, and here we will again go for throwing the dice again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, tail or head, 5, tail or head, 6. Again the number. Find the condition probability of the event that coin shows a tail when at least one die shows a 3. So our sample space here would be like our sample space is 1 tail, 2 tail, 1 head, 2 tail, 2 head, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 tail, 4 head, 5 tail, 5 head, and 6 4, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. So we get so our conditions are in that coin shows a tail. Coin shows a tail. So it shows tail on 1 tail, 2 tail, 3 4 tail, and 5 tail. And at least one die shows a 3. So F is at least one die shows a 3. One die shows a 3. So one die shows a 3 are 6 3 and 3 3 3 4. Every 3 conditions. 3 1 3 6 and 6 3. Even at least one die shows the 3. At least one die shows the 3. Okay, sorry, sir. I will take this question also at last. Okay, let me read the exercise first. You mistake here. So we have been given value P A equal to 1 by 2 and P of B equal to 0. So we have to given P A intersection B. P A condition B की वैल्यू पूछी गई है. तो हमारे पास पी ए की वैल्यू हाफ है और पी बी की वैल्यू 0 है. तो हम इसमें क्या हमारे पास इसमें कोई कंडीशंस नहीं दी हुई है कि हम बता सके कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो. तो हम इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ना निकालने के कारण इसको नॉन डिफाइंड बोलेंगे. एंड 17th question, if A and B are given such that P A condition B, तो इसको हम लोग यहाँ बना देते हैं. At 17th question, P A condition B question, P B condition A. तो इसमें हमें P A intersection B by P A P B equals to P A intersection B by P B. तो हमें P A और P B की वैल्यू बराबर है ये पता चल रही है इस सीन में. ये एक चीज पता चली. और दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं अगर पी ए और बी की वैल्यू बराबर है मतलब
ये बोल सकते हैं कि पी ए और बी की वैल्यू बराबर है। हाँ, तो बस एक ही चीज यहाँ पे भी प्रूव कर सकते हैं, पी ए और बी की वैल्यू बराबर है। पी ए